लगा कर बोलो ये है कौन? ये है डॉक्टर, वैक्सीन ये लगाते, पेशेंट्स को ट्रीट करते हमारे डॉक्टर्स. We thank you doctors. Hello my lovely little Bal Mandir kids. How are you all? And do you want to know why Branti ma'am was singing this song about a doctor? Yes, because today we are going to celebrate Doctor's Day. And you all know who a doctor is, isn't it? हम जब बीमार होते हैं तो हमें कौन ठीक करता है? Yes, a doctor. Doctors are very helpful to our community, isn't it? During this period of pandemic, these doctors have saved so many lives and we are so thankful to them. Now, on today's occasion, why don't we all grab this opportunity and thank all the hard-working doctors of our country? And to know more about this day, let's call upon Anamrata ma'am and Bexy ma'am. Namaste, I am Bexy ma'am and I welcome you all to the celebration of National Doctors Day. Today, we will be exploring the audacious world of doctors, and for that, let's call upon Master Kunj from UKGC to inform us more about this day. We celebrate National Doctors Day on 1st July every year to honor the legendary physician and the second Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy. We celebrate this day to show our respect and gratitude to all the doctors of our nation. So, let's give a tribute to these people for their endless efforts. कुंज, that was really very resourceful. जब भी हम किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, yes, the most common answer given by these kids is I would like to become a doctor. तो चलिए, आइए देखते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए. When I grow up, I want to be a doctor and take care of everyone. I want to be a doctor, I want to go to school. I want to learn how to take care of me and you. I want to be a doctor, I want to go to school. I want to learn how to take care of me and you. I'll check your ears, I'll check your heart. I'll write your temperature in my chart. I'll check your height, I'll check your weight. I'll say to you, you're doing great. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I'll check your tongue, I'll check your nose, I'll check your reflexes and toes. Listen to your breathing with my stethoscope and say, you're healthy, I hope. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. Of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. Be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I wanna be a doctor, I wanna go to school. I wanna learn how to take care of me and you. I'll check your ears, I'll check your heart.
temperature in my chart. I'll check your height, I'll check your weight. I'll say to you, you're doing great. I want to be a doctor and take care of everyone. इन छोटे छोटे फ्यूचर डॉक्टर्स को देख के लगता है कि हमारा देश का फ्यूचर ब्राइट है. So here we welcome our little Ananya from playgroup to express her feelings. आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? मेरे आजा डॉक्टर हैं, मेरे मम्मा डॉक्टर हैं, मेरे हमारा आजी डॉक्टर हैं, मेरे वो पापा डॉक्टर हैं, और मेरे सामने आजी डॉक्टर हैं, और मेरे पापा डॉक्टर हैं, और मेरे ये आजा डॉक्टर हैं, और मेरी अम्मा डॉक्टर है, और मेरी मम्मा डॉक्टर है. हैप्पी डॉक्टर्स डे. आप टर्न करके बोलिए हैप्पी डॉक्टर्स डे. हैप्पी डॉक्टर. Wow, Ananya, you are so lucky to have a family full of doctors, and we are 100% sure that one day even you will become a great doctor. So here we welcome Master Vraj to say a few words on doctors. वो है जो जैसे में भी आशा की लोग लगा देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं. उनके अच्छे स्वभाव से, उनके महान कर्मों से भी हम इंसान उनको धरती पर भगवान का स्थान देते हैं. Here are some of the doctors we are lucky to have us as parents with us. They will share their views. Hello everyone, myself Dr. K.U. Solanki. I am working as a general practitioner. For me, doctor is a healer, one of the most caring and responsible person in the world. When I was 15, my grandparents felt ill. At that time, my parents and our family has to face so many difficulties. That incident changed my mind and I decided to become a doctor. We are proud that in this pandemic situation I served the nation. And on behalf of Doctors Day, wish you all happy Doctors Day. Get vaccinated, wear mask, keep social distancing, stay home, stay safe. Hello everyone, myself Dr. Kalindia Solanki. By profession, I am a general practitioner. So for me, doctor is the one who is a good listener, counselor and healer who heal the half of the sorrow of the patient only by counseling. So my motive to become a doctor is to help those needy and poor patients who live in a village area where they cannot afford hospitalization cost. So I help them by providing a treatment. So on a Doctor's Day, I want to say thank you to all those who help us during this pandemic, like frontline workers, nurses and all my doctor colleagues. So thank you so much. Stay home, stay safe, wear mask, maintain a social distance. So thank you so much and happy Doctor's Day. હેલો એવરીવન, હું ડૉક્ટર મનીષ ઠાકોર, આસ્થા ક્લિનિક અબ્રામા વલસાડ. હું એક જનરલ પ્રેક્ટિશનર છું. ડૉક્ટર બનવા પાછળનો મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આજના સમયમાં ઓછામાં ઓછા ખર્ચે યોગ્ય સારવાર અને માર્ગદર્શન મળી રહે એ માટે હું હંમેશા પ્રયત્ન કરતો રહ્યો છું અને કરતો રહીશ. હેપી ડૉક્ટર્સ ડે. ઘર पे रहो, सुरक्षित रहो. थैंक यू. Doctors have big responsibility towards mankind. You all are great doctors as well as lovely human beings. Thank you all for sharing your views. Oh, Vraj, that was very generous of you to appreciate all the doctors. There are many misconceptions about getting vaccinated for COVID-19, and here we have Dr. Akshay Nadkarni to illuminate us about the same. मैं डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी, कैंसर सर्जन, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल्स वापी से. आज मैं आपको बताऊंगा कि कोविड वैक्सीन कितना जरूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए या आम आदमी के लिए.
जरूरी है समझना कि कोविड 19 जो महामारी भारत देश में आई है उसके संबंधित बहुत सारे अंधश्रद्धाएं हो चुकी हैं। काफी सारे लोग मास्क नहीं पहनते, ओपन गैदरिंग में घूम रहे हैं। लोगों को अभी भी लग रहा है कि कोविड एक फालतू चीज है। ऐसा नहीं है। ये सेकेंड वेव जो कोविड का आया था उसमें सबसे ज्यादा मौत हुई है 30 से 40 की एज के मिडिल एज्ड लोगों की। जरूरी है समझना कि आप सब बच सकते हैं प्रोवाइडेड आप 2 कोविडशील्ड के या कोवैक्सीन के कोई भी वैक्सीन के डोजेस आप ले लो। कोविड 19 के आपके नियर बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या अस्पताल में जाइए, कोविड 19 के बारे में तपास करिए और आपकी वैक्सीन का टर्न जब भी आता है, जो भी वैक्सीन मिलता है, आप ये 2 डोजेस वैक्सीन के ले लीजिए। हमारे हॉस्पिटल में 180 स्टाफ था। फर्स्ट वेव के बाद हम लोग ने सबने वैक्सीन लिया। सेकेंड वेव में एक सिंगल मास्क से सभी कोविड पेशेंट्स को हम लोग ने ट्रीट किया। आउट ऑफ 180 किसी को भी सेकेंड वेव टच नहीं कर पाया। ये प्रूफ है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और बहुत इफेक्टिव। तो यही टेक होम मैसेज है कि कुछ भी हो जाए, आपका टर्न आते ही वैक्सीन लीजिए, दोनों डोज। उसका अंतर जो है गवर्नमेंट के हिसाब से 45 डेज टू 80 डेज का है अंतर। वो जब भी आपका चांस आता है प्लीज वैक्सीन लीजिए और कोई भी वैक्सीन रिलेटेड अंधश्रद्धाओं में मत जाइए। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने खुद ने वैक्सीन ली है 2, कुछ भी नहीं हुआ है हमको। वैक्सीन के 1 महीने बाद एंटीबॉडी का टाइटर कराइए तो पता चलेगा कि आपका वैक्सीन का इफेक्टिविटी कैसा है। तो एंटीबॉडी के लेवल्स के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि नहीं। वैक्सीन लेने के बावजूद आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने हैं, हाथ धो के घर के अंदर आना है। कहीं बाहर जाके आते हो तो नहा के फैमिली मेंबर्स को मिलिए, बूढ़े बुजुर्ग से दूर रहिए एंड सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करिए। ये सब प्रोटोकॉल्स मेंटेन करिए अलॉन्ग विथ टेकिंग योर वैक्सीन। तो ही हम सब मिलके ये महामारी से दूर हो पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, doctor, for guiding us and giving us an informative talk on vaccination. Last but not the least, we salute all the doctors for saving thousands of lives by putting their own life on risk during this crucial period of COVID-19.